Assalamu alaikum students. I hope you people are doing well. So today we will continue the unit 4 of chemistry class 9th, which is periodic table and periodicity of properties. We have done MCQs and short questions and long question number 1 to 10 earlier about 2 to 3 weeks back. So today we will make last part of this chapter, in which we will cover the long question number 11 to 13 and think tank questions 14 to 17. Let's start. Question number 11 is, write the valence shell electronic configuration of atoms of the following elements. कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है, लिखनी है हमने. First element is an element present in period 3 of group 5A. Period 3 बता दिया है और group क्या बता दिया है, 5A बता दिया है. अगर हम देखें तो period 3 means the element is in the third row of the periodic table. Row is third, so N will be third. So its valence shell will be third shell. Okay. Then group 5A means the element has 5 valence electrons. Means the electrons, these electrons are arranged in the outermost shell, which is ns2 and np3, and we know n is 3. Okay. So we have identified that this is because the s orbital can hold 2 electrons and p orbital can hold 6 electrons. The element that matches this position is phosphorus. So valence shell electronic configuration of this element is 3s2 and 3p3. ठीक है. Next question is, an element present in period 2 of group 6a. Group, अब यहाँ पे period 2 है और group 6a. Period 2 means the element is in the second row of the periodic table, so its valence shell will be second shell, which is n is equal to 2. Group 6a means the element has 6 valence electrons. These electrons are arranged as s2 and p4. These this means 2 electrons go into s orbital and 4 electrons go to p orbital. The element that matches this position is oxygen, and the valence shell configuration of oxygen is 2s2 and 2p4. 2 because it is in period 2, और valence shell configuration s और p मिलाए कर रही है, तो 2s2 and 2p4 is the valence shell electronic configuration of oxygen. Question number 12 is, copy and complete the following table. A table was given जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टेबल था. उसमें से ये जो रेड वाले हैं ये वैल्यूज हमें गिवन थी, हमने बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हैं ईच सेक्शन में. अब सबसे पहले की बात करते हैं कि उन्होंने हमें एटॉमिक नंबर दिया 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए 12. बाकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है. As we know, atomic number is always equal to number of protons. So 11 atomic number था, तो हमारा number of protons क्या आया, 11 आया. ठीक है. अब number of proton हमारे पास आ गया, तो number of proton is always again equal to number of electrons. तो हमने पहली लाइन में electrons भी 11 कर दिए. अब now we have to find the mass number. mass number क्या है, proton plus neutron. तो हमारे पास प्रोटॉन क्या था 11 और न्यूट्रॉन क्या था 12. सो 12 प्लस 11 इज इक्वल टू 23. दूसरी लाइन में दे हैव गिवन अस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए. हमने सबसे पहले तो इससे मास नंबर फाइंड कर लिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच इज 29. अब हमने एटॉमिक नंबर बताना था. एटॉमिक नंबर इज अगेन इक्वल टू प्रोटॉन, सो हमारे पास 14 आ गया. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन इक्वल टू प्रोटॉन, तो वहां पे भी हमने 14 पुट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने हमें मास नंबर गिवन दिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए. ठीक है. तो हमने क्या फाइंड करना, सबसे पहले हम नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लेंगे. हम मास नंबर वाले फार्मूला मतलब उसमें से निकालेंगे प्रोटॉन इज इक्वल टू मास माइनस न्यूट्रॉन. हम मास में से जो 47 है उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 22. सो अब हमारे पास प्रोटॉन आ गया. तो प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वहां पे भी हम 22 पुट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज they have given us mass number and number of electrons. मास नंबर मौजूद है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन इज नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. सो वी गॉट दीज वैल्यूज. अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? मास में से प्रोटॉन को माइनस करके, तो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14. I hope you understood this table. If you have any confusion, you can ask me again in the comment section. Question number 13. In which block, group and period in the periodic table where would you place each of the following elements with the following electronic configuration? अब ये क्वेश्चन नंबर 11 का रेसिप्रोकल क्वेश्चन है. इसमें अब उन्होंने हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी. अब हमने इनका ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है. अब यहाँ पे अगर हम देखें 1s2 एंड 2s1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल क्या है? 3 है. तो एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है, विच इज अगेन लिथियम. हम इसका देखें अगर, तो पीरियड क्या है? हाईएस्ट शेल का क्या है? नंबर 2 है. और ग्रुप क्या है? 1 है. वैलेंस शेल में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? 1. और ये ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक है. यू कैन सी. सो इट इज सेकेंड पीरियड, ग्रुप 1A एंड एस ब्लॉक. 1s2 2s2 2p6. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 10 है. तो हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर. तो ये हमारे पास 10 एटॉमिक नंबर किसका है? नियॉन का है. अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास हाईएस्ट शेल में वैल्यू क्या है? 2. ठीक है. और ग्रुप क्या है? 18. ठीक है. नोबल गैस आउटर शेल इज कंप्लीट. यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि आउटर शेल कंप्लीट है. ब्लॉक क्या है? P है. सेकेंड ग्रुप 8A एंड P ब्लॉक. क्वेश्चन नंबर पार्ट C इज 1s2 2s2 2p6 3s2. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 12 है, विच अगेन एटॉमिक नंबर इक्वल क्या है? मैग्नीशियम के. पीरियड क्या है? 3 है. हाईएस्ट शेल क्या है? 3 है. और ग्रुप क्या है? ग्रुप वैलेंस में हमें वैलेंस शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन नंबर नजर आ रहे हैं. तो ग्रुप क्या है? 2 है. ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक है. अगेन थर्ड पीरियड, ग्रुप 2A और एस ब्लॉक. लास्ट पार्ट इज 1s1. तो हमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. तो एटॉमिक नंबर 1 इज ऑफ हाइड्रोजन. पीरियड क्या है? 1. ग्रुप क्या है? 1. ब्लॉक क्या है? S. तो फर्स्ट पीरियड ग्रुप 1A और S block. Let's start think tank section. Question number 14. What type of elements have the highest ionization energies and what type of elements have the lowest ionization energies? Argue कि कौन से elements की highest ionization energy होती है और कौन से elements की lowest होती है. Elements with high ionization energy are noble gases and halogens. Halogens जिसमें non metals आते हैं. They present on the right side of the periodic table, especially in the top periods. Reason: these elements have nearly filled or completely filled valence shells. ठीक है. इनके valence shells complete होते हैं. They are very stable and do not want to lose their electrons. उनमें strong force of attraction होती है. ठीक है. So a large amount of energy is required to remove the electron from valence shell. Elements with low ionization energies, alkali metals जैसे group 1A हो गया, present on the left side of the periodic table, especially in the bottom periods. Reason: they have only one valence electron which is loosely bound due to large atomic size and weak nuclear attraction. Therefore, they can easily lose this electron, so they require very little energy to remove it. Question number 15, part 1. Two atoms have electronic configuration 1s2 2s2 2p6 and other has electronic configuration 1s2 2s2 2p6 and 3s1. The ionization energy of one is 2080 kilojoule per mole and that of the other is 496 kilojoule per mole. Match these ionization energies with one of the given electronic configuration. Give reason for your choices. हमें electronic configuration को show करना है, match करना है ionization energies के साथ. 496 kilojoule per mole is the ionization energy of 1s2 2s2 2p6 3s1. Why? This is an alkali metal type which has one electron in its valence shell with one loosely bound valence shell electron, so very easy to remove it, and hence low ionization energy, which is 496 kilojoule per mole, like sodium. 2000 अच्छा नेक्स्ट क्या है? 2080 किलोजोल पर मोल किसकी है? 1s2 2p6 2s2 2p6. This is a noble gas. We can see the closed shell
Removing an electron from a stable filled shell needs very large energy. Hence, the very high ionization energy, which is 2080 kilojoule per mole, is required, found in neon. Part 2 is use the second member of each group from group 1A, 2A and 7A to judge that the number of valence electrons in an atom of the element is same as its group number. हमने इन ग्रुप्स के सेकंड मेंबर्स को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम जो उसका ग्रुप नंबर होता है. द सेकंड मेंबर पीरियड 3 ऑफ ईच ग्रुप 1A सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एंडिंग एट 3s1. तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर भी क्या है 1 है. ग्रुप 2 का देखें अगर हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एंडिंग एट 3s2. तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर क्या है 2 है. ग्रुप 7 है क्लोरीन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 प्लस 3p5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 है. तो ग्रुप नंबर इज अगेन 7a सॉरी ठीक है 17 नहीं 7 ठीक है. Conclusion: for these normal representative elements the group number equals the total number of valence electrons because the group is defined by how many electrons occupy the outermost s and p subshells. अच्छा, these examples sodium, magnesium and chlorine clearly show this equality. Letter A, B, C, D, E and F indicate the elements in the following figure. इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे पीरियोडिक टेबल में हमें ये लेबलिंग नजर आ रही है. इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. विच एलिमेंट आर इन द सेम पीरियड. एलिमेंट ए एंड बी आर इन द सेम पीरियड. ठीक है, ए एंड बी आर इन द सेम पीरियड. वी कैन सी इट क्लियरली विच इज पीरियड नंबर 3. एलिमेंट डी एंड ई आर इन द सेम पीरियड विच इज पीरियड नंबर 4. राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट डी. एलिमेंट डी की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो ये पीरियड नंबर कौन से में एलिमेंट डी इज लाइंग इन ग्रुप 2A. देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2. द नेम ऑफ द एलिमेंट इज कैल्शियम. व्हिच elements are metals. Elements A, group A or D are metals. Group A element are metals because group 1A represent alkali metals and group D represent for the typing mistake group D metals represent alkaline earth metals. ठीक है, A और D एक A क्या है metals है और D क्या alkaline earth metal है. Which element can lose 2 electrons? Element D जो group 2A है can lose 2 electrons because element D contains 2 electrons in its valence shell. In which group E is present? Element E is present in group 5A and the name of the element is arsenic. Which of the element is halogen? Element F is halogen because it lies in group 7A. The name of the element is iodine. Which element will form depositive cation? The element form depositive cation because it lie in group 2A and can lose 2 electrons. ठीक है. Write electronic configuration of element E. An element E lies in group 5 and name of the element is arsenic. The atomic number of arsenic is 33. Electronic configuration of arsenic is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 and 4p3. Part I is which two elements can form ionic bond. Elements A and F, D and C can form ionic bond because elements A belongs to group 1A elements, D belongs to group 2 elements. Group 1A and 2 elements can lose electron in their valence shell easily due to low ionization energies, whereas elements C and F belong to group 6A and 7A respectively, high electronegative atoms. ठीक है. Can element C form C2 molecule? Interpret. Yes, element C can form C2 molecule. In this, C belongs to group 6A. The name of the element is oxygen. The molecule of oxygen is represented by O2. Okay. Which element can form covalent bonds? Element C and F can form covalent bonds. Element C belong to the group 6A and the name of the element is oxygen. Oxygen form double covalent bond. Element F belong to group 7A and name of the element is iodine. Iodine also forms single covalent bond. Okay. Is element F a metal or a non-metal? The element F is non-metal. Element F belongs to group 7A and the name of the metal is iodine. Iodine forms single covalent bond. Question number 16. Electronic configuration of 4 elements are given here. Which of the element is इनमें से कौन सा element an alkali metal है
Element which has 1s2 2s1 is the electronic configuration of alkali metal because the element has one electron in its valence shell, group 1a. The name of the element is lithium. And alkaline earth metal has the electronic configuration given in part C is the electronic configuration of alkaline earth metal because the element has two electrons in its valence shell, group 2a. The name of the element is magnesium and earth metal because it is found in 2a. A noble gas configuration given in part D is the electronic configuration of noble gas because the element has two electrons in its valence shell, which is group 7a. The name of the element is helium. And halogen, it will have the electronic configuration given in part B is the electronic configuration of halogen because the element has 2 plus 5 7 electron in its valence shell, which is group 7a. The name of the element is fluorine. Question number 17. Argue in what region of periodic table you will find elements with relatively high ionization energy and low ionization energy. High ionization energies, elements with high ionization energies are located in top right region of the periodic table, mainly among the non-metals, halogens group and noble gases. Reasons: smaller atomic radius, very few shells and strong attraction between nucleus and the electrons. High effective nuclear charge. Valence electrons are held tightly. Stable configuration. Noble gases have filled shells resisting electron removal. Example: helium and neon have extremely high ionization energies due to strong nuclear attraction and stable configuration. Low ionization energies. Elements with low ionization energies are found in bottom left region of the periodic table, particularly early metals group 1 and alkaline earth metals group 2 because they have a larger atomic radius. More shells increase distance between nucleus and valence electrons. Shielding effect: inner electrons reduce nuclear pull on these outermost electrons. Easier to lose electron: alkali metals have one valence electron which they readily lose to achieve stability. Example: cesium and potassium have some of the lowest ionization energies due to the large size and weak nuclear attraction for their single valence electrons. So that's all for today. Thanks for watching. We have completed this unit which we have started 2 to 3 weeks before. I hope you understood the all of these questions. So if you like this video, then like it, comment down, share with your friends, and subscribe to this channel. Till the next video, next chapter, take care and Allah Hafiz.